Good morning, 11th standard. And as all of you know that we are doing the chapter number 9, and that is hydrogen. But is chapter ke andar we have already done about the what is hydrogen, what will be it, what is its position in modern periodic table, and what are the different types of hydrides which is formed by hydrogen when it combines with the metals or non-metals or d block elements. Okay, so this we have already discussed in our previous one lectures, or we can say in videos. And now today I am talking about or discussion about the water. So आज हम water की properties, water का basically structure करेंगे कि water का structure in liquid form how it is, and in your gaseous form how it behaves, as well as in solid form or in solid state how water behave. Okay. Yes, as we can see, first of all, we just discuss about the physical properties of water. तो आप लोगों को पता होना चाहिए that it is the most abundant and the commonly easily obtainable in all chemical compounds. और man के लिए और human being के लिए, or we can say the life, for life survival, it is a crucial one compound. It exists in all the three forms or all the three states, that is solid, liquid, and gas. It is the universal solvent, and maximum number of the substances can be easily dissolved in it. 70% of the body, our body or human body, that contains water, and whereas if we are going to say, then 75% of the earth that consists of water. It is a colorless, tasteless, and a volatile liquid. है ना? Volatile कैसे है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है in between the oxygen and hydrogen. It is a polar molecule, and it shows a behavior like a covalent compounds like alcohol or carbohydrates, and that's why this is the reason that the polar covalent compounds like alcohol and carbohydrates easily dissolved in water. जैसे कि आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जिन्हें आप मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं. So all these can easily dissolve in water. If we are talking about the structure of water, then we will discuss definitely it in detail. And water has a bent shape with bond angle of 104.5 degree. Now, why it is having a bent shape? This is we are going to discuss. And the crystalline form में water की that is present as an ice, और ice जो होता है वो solid state में है. Density of ice, you all must know that it is less than that of water, and this is the reason that it the ice cubes that floats on water. Okay बेटा, so this is about your structure of water. तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इज H2O. ऑक्सीजन जो होता है वो sp3 hybridized है, and hence it has 4 sp3 hybridized orbital. Of these sp3 hybrid orbital जो होती हैं वो half filled होती हैं. sp3 orbitals इसकी oxygen की, and hence that's why it overlap with the 1s orbital of hydrogen to form दो 2 sp3s. s किसका है? 1s is from your hydrogen and sp3 is from oxygen. So sp3OH sigma bond बनाता है, जबकि जो दो अदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके क्या होते हैं, इसमें लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं. एंड दैट्स व्हाई अगर हम बोल रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम जो है वो sp3 हिब्रिडाइज्ड है, तो इट शुड बी ज्योमेट्री, its geometry should be tetrahedral sp3 में, but because of the presence of these two lone pair, it is a bent in shape. इसका bent in shape हो जाता है, and lone pair repulsion ज्यादा है, जिसकी वजह से कि आपका जो है it is having an angle of 104.5 degree in between the two hydrogen and oxygen, and the length of one OH bond is 95.7 picometer. And experimentally
अगर हम कहें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग HOH एंगल जो होना चाहिए that should be 109.5 degree due to tetrahedral structure, but it's experimentally it is found that its actual bond angle is 104.5 degree, and oxygen is more electronegative in nature, and due to which H positive, H is hydrogen is carrying a delta positive, whereas oxygen is carrying a partially delta negative nature or a charge here, due to which it is to be considered as a polar molecule. Now, if we are talking about the hydrogen bonding in water, then yes, if we are talking about the hydrogen bonding in water, then as all of you know that in liquid state, water molecules जो होते हैं बेटा, these are held together by the intramolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर में कैसे होगी, देखो ये यहाँ पर आराम से, ये एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है. When they are forming a bond in between them, one molecule of water, oxygen is participating for the bonding, and the another one molecule of water, from that a hydrogen bonding is participating, then the bond which is to be formed in between these two, that is known as the intramolecular hydrogen bonding, and that can form the hydrogen bonds. तो हर वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरीके के लोन पेयर्स की वजह से, आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन bond भी बनाएगा, and each water molecule is generally hydrogen bonded to 4 other water molecules. वो 4 और water molecule के साथ hydrogen bonded होता है, and that's why we can say that in the liquid state water is existing as an associated liquid. इसके अंदर लिक्विड वाटर में बहुत सारे छोटे 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 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं with the help of a hydrogen bond, and the free water molecule is also present in the dynamic equilibrium with the aggregate, and which just collapse with each other and then again formed by itself, and reforming is taken place. ठीक है बच्चे. Next is about the structure of ice. Now, when water is freezing, then it forms ice, which is the crystalline form. Now here, the water structure is taking a particular perfect or a regular pattern. Like here you can see बेटा, इसमें देखिए freezing हो रही है और ये bonds अपने को क्या कर रहे हैं, सारे atmospheric pressure में ice जो है वो crystallize करता है अपने आप को. और sorry, just 1 minute. ठीक है बेटा, तो हमने बात करी वाटर फ्रीज होगा तो फॉर्म्स आइस करेगा, और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर बनते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस जो होता है नॉर्मल हेक्सागोनल की फॉर्म में होता है, एज यू कैन सी हियर इन द फिगर. जैसे कि इसमें देखिए बच्चे, जस्ट 1 मिनट. ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए ये जैसे आपका क्या है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका जो है ये आपके नॉर्मल हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट आल्सो कंडेंसेस इन द क्यूबिक फॉर्म. नॉर्मल हेक्सागोनल आइस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर नीचे वाले में देखिए, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स. यहाँ पे देखिए 4 और ऑक्सीजन एटम के साथ वो क्या होता है, सराउंड होता है, एंड देयर इज अ हाइड्रोजन एटम बिटवीन ईच पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से आइस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप इन बिटवीन इट, एंड दिस इज द रीजन दैट आइस इज लाइटर or ice is less denser than water, which is an associated form. So each oxygen atom is surrounded by 4 hydrogen atom, which is surrounded by the 2 strong covalent bonds and 2 weak hydrogen bonds. And since hydrogen bonds are longer than the covalent bonds, and due to which water molecule are not closely packed in the crystal lattice, there exists a number of vacant space in the crystal lattice, and that's why this is the reason the density of ice is lower than that of liquid. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आ गया, जब आइस आपकी इस तरीके से होती है प्रेजेंट, आइस जब मेल्ट करती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो लगे हुए हैं आपके, दीज आर ब्रोकन, एंड केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट आल्सो कोलैप्स. So some of the vacant spaces that disappear
और जिनको उन वैकेंट स्पेसेस की जगह और वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सेम मास ऑफ वाटर के आते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। सो अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एट 273 Kelvin, that is higher than that of ice, and hence ice floats over liquid. So today we studied about the physical properties of water, structure of water molecule, and structure of ice molecule, why ice floats, or why ice is lighter than the water. That also we have discussed. You have to go through your NCERT book, just read the topic again from your NCERT and do the questions based on it. Thank you.